Yes. So, so then I would, I was telling that I am in two sessions. Yes. So two sessions I have to take. So I am actually planning to start with the second one because second one is a smaller one where we wanted to talk about the bias mitigations. So I will start for that, and then the GAN session would be taken with the full length after the Aditya class. However, again. Yes. So what I was telling is that I will start with the second one because the topic is easy and you can easily understand that part. So I will start with that. Second part is actually more involved and it takes more time. So I will start after the Aditi session. However, again there is a caveat that Aditi is taking more advanced topic as compared to the first one because it's a diffusion model. Diffusion models are the state-of-the-art models. So I will try to see that what can be done with bias, but that would be a second problem, not the first problem. Okay, so we can simply start this. Okay, all right. Okay. So online participants. Online participants, can you please tell me that you are able to hear me? Anybody, please unmute yourself and tell me that you are able to hear me. Any one of you? Yes, sir. Great. Okay. Yes, sir, you are audible. All right. Okay. So so let us start. So before starting, I just wanted to tell that the content that I am going to cover here is attributed to the MIT 6.191. That is AI bias and fairness. The same topic is available there on the YouTube. You can just see that. So here is a question. Okay. Can you see this image? Can you explain what it is? Everybody? Watermelon. Some more information? Yes? Pieces? It is cut in pieces. Anything else? Color, triangular pieces. Triangular pieces? Yes? Red and green color. Triangular pieces and watermelon and triangular pieces. Okay? Cone shape. Cone shape. Okay, great. What about this? Seeds. What about this? Watermelon. Yellow watermelon. Say again. Say again. Yellow watermelon. Watermelon. So why it is yellow watermelon? Earlier was not red watermelon. Then why it is a yellow watermelon? Okay. This is the bias that we have. Okay. This is the bias we have. This is the problem with us. That earlier was red, but we are not telling you red because we have actually stereotyped that these watermelons are actually red. Okay, so these are the problems. Actually, you may not see that there is a problem right now, but this is a problem because if there is a scenario where multiple kind of peoples are there and you say that person means this only, then it becomes a problem. The other category becomes eliminated. Means you can
so you actually are actually labeling to the things first. Why you label? Because you want to handle, because everybody is in this class, everybody is same, but we say that few are male and few are female. Why? Because it is very difficult to deal with lot many people. So we segregate. Now it is easy to deal with the smaller group. Okay, why we make groups in our WhatsApp? Because we can deal with a small number of people. So if we make groups, okay, then we have to only deal with that person, not the all persons. So that's why we in the interest of our cognitive ability, we keep doing all these things. Okay. For example, in your class also, your class also, your teacher may make somebody as a class monitor. Why he make class monitor? So that if something bad happens, he need not to go to everybody. He only go to the class monitor. Tell me what happened. Okay. So you do some kind of labeling, and then using that you do prototyping, and at the end it actually reaches to stereotyping that looks like that everybody is something of that particular kind. This is a problem with the database, because this is a simple example where face recognition systems were available face recognition system has been evaluated, that what is their performance on the actually different diversified categories of the peoples. So it has been found that the lighter male peoples who are actually whose skin tone is lighter, 100% accuracy, 99.2% accuracy, 99.7% accuracy. But if you go to the darker male, it becomes 94%, 99.3%, 88%. You see that how the difference came. And if you go to the female peoples, so with the male and female, even with the lighter, you can see that 98%, 94%, 92%. And if you go to the darker female, okay, darker female, you see that there is a huge gap. Somewhere the largest difference is about 20%, 33%, 34%. Okay, so there were two different studies where it is more fine-grained analysis where on the different kind of data they try to analyze. So you can see that there is a issue, there is a big issue. Okay, system trained for one thing is actually not going to work for the other. And the same thing can be seen over here. For example, if this image is shown to the general models, which are actually going to tell that what is inside the image, they describe that there is a bride, there is a dress, there is a ceremony, there is a woman. These kind of thing he is telling. But it is with respect to the West. Okay. But if we see that what is happening over in India, for example, here you can see that somebody is I think is a ritual time when some Mang Bharna, something like that. So this is happening. If you send this image, there is no, you're not going to tell it's bride, not dress, not ceremony, not, maybe you can tell only women. So why it is happening? Okay, so bias comes in various ways. So bias, generally you can see that it happens because we have not used this kind of data for the training. Okay, so bias comes from the training. Bias comes from the model. We develop the model which are more suitable to the one kind of things and not suitable for the other kind of things. We do a different kind of training and deployments, and also we evaluate in a different way. Okay, if watermelon is told to me, I inherently understand that it is only red. Okay, so this is kind of different thing, interpretation. It comes the interpretation part also. That I am only interpreting in this way, that whenever it is like that, again, because of our cognitive abilities, we want to use lesser number of items. Bias can be of many types. It can be data driven or interpretation driven, and these are the most two important categories. This example you can see that, let's assume that you want to predict something about this black line, okay, but you don't know that what is the properties and etc. Somehow you have plotted it and you understood that this red one is actually going to be near to that. Okay. Yes. So if data is not available for you for black one and data is available for the red one, so one strategy could be, okay, you train the data, you train the model on your red data, and then use the same model to predict what is the next value. Is it the right thing? Looks like, because they are actually related. But this is very problematic thing. Okay, this is called the correlation fallacy, a very problematic thing. Okay, let's assume that this black line
talks about the number of PhD students in the country and this number of birds migrations. So they are same. What does it mean? Number of species which migrate, something like that. So they doesn't make any sense, okay, actually. But you have developed the system. Your system is working because of these data. Earlier data point it is working. You are telling that my system is working, but your system has huge bias. Okay. So selection bias, sampling bias, reporting bias, correlation fallacy, overgeneralization, automation bias. So different kind of biases are there. So what is the selection bias? What is selection bias? Selection bias is something that, for example, for the experiment, the people who I am calling them, I have to be very selective. For example, I just give my example. I have a project. Yeah. Giving preference of one to For example, I have a project. I have to develop a system that Rituraj is developing right now. That any intoxicated person who, when he enters the room, from the camera you should be able to identify that he is intoxicated or not. Okay, if he has intoxication means have you taken liquor or something like that. So we have to use computer vision to develop that model. So Rituraj is working on that. The problem is that how to find out the people who are going to volunteer that I am going to be intoxicated and give the data. So I don't have any choice. So I would go to those people who are actually not representative of the society. Again, it's a problem. How to solve it? Again, this is a big computer science problem. Okay. Sampling bias, okay? So sampling bias is this, that let's assume that I have collected the data, and from data, maybe I cannot use all the data. I sample something and do the training. In that kind of sampling, what should I do? Should I do the same thing? Because let's assume that I wanted to find out that what percentage of people are suffering with the COVID. Okay, I go to the hospital. I see that 500 people are actually 500 people data I have, and 400 of them are identified as COVID, 100 are not. So I can say that in the population, whether 1/4 of the 4 by 5 population is actually suffering from the COVID. No, because I have taken the data from the wrong place. There, most of the people are actually having suffering only. And then the reporting bias. Reporting bias means what? That when the result comes, some results are more sounding effective as compared to other. For example, somebody said that let's assume that you in a game of let's assume आप कोई you invest some money to somewhere, okay, and in this investment you can gain or you can lose. If you gain 100 rupees, okay, so how much pain you have? If you lost 100 rupees, how much pain you have? It has been understood that loss is 10 times more effective. The happiness that you get by getting 100 rupees is not that much as you get the loss with the 100 rupees. Okay, you get 100 rupees, you are not that much happy. But if you lose 100 rupees, you are very, very upset that I lose 100 rupees. Okay, so there is a reporting bias that even the things are positive and negative, but they have different value in that particular terms. Okay, correlation fallacy we just talked about. Overgeneralization is again that combining multiple things, and automation bias. Automation bias means if something is coming from automated system, okay, some model, and somebody is told by the machines, us humans, I believe that the machine सही था, है ना? ये प्रॉब्लम. ऑटोमेशन बायस की मतलब यार ये तो उससे मशीन से आया है, मशीन ने बताया है कि मेरे जो है ब्लड में थोड़ा सा वो क्या है, ब्लड शुगर बढ़ गया है मेरा, है ना? अब कोई आदमी आपको देख के कह रहा नहीं है तू तो बिल्कुल सही लग रहा है, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू सब अच्छा से दौड़ता है, वो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं मशीन ने बताया मेरे को, है ना? तो दिस इज ऑटोमेशन बायस. इस तरीके देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बायसेस विल कम इनटू द सिस्टम. एंड वन मोर kind of bias in this, which actually says that let's assume that you have trained the data on some map data, and now you want to test it. तो टेस्ट तो आपको आज करना पड़ेगा. और उस समय जो टेक्नोलॉजी 10 साल पहले का जो डेटा जिस पे आपने ट्रेन किया था, उससे अभी तो डेटा चेंज हो गया. अभी तो बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस आने लगी. इनके ऊपर आप ट्रेन करोगे तो क्या होगा? फिर अगेन नए तरीके की बायस आ गई. उसी जगह का फोटो तब और अब से अगर आप if you are going to compare, they are going to be different. Okay. Again, there is some kind of problem that let's assume that this is what the distribution of 3 different categories in the society. Let's assume
but you have collected the data and you have collected this, that for A you have collected more data, B you have collected less data, C you have collected this much data. If you develop the system on this, the answer would also be of this kind, not this kind, but you want that answer should be of this kind. So there are these kind of some of the problems that we have. And with respect to model, a very interesting thing comes. Okay, and especially it comes when something is very rare. Okay, so for example, let's assume that there is some problem. Okay, out of 10 lakh people, so only 3.19% people, 3.19 people kind of have those kind of problems. Let's say there is some disease. Okay, you have collected the data and you are developing the system for that. So what is the accuracy? If the system tells everybody, let me give you another example. Let's assume that you are developing a system for terrorist detection. Okay, whether he is going to board the flight or not. Okay, you are developing a system whether a terrorist is going to board the flight or not. So you are developing, so your system would be something gate type. Somebody comes in front of it, gate opens, that he is not terrorist, he goes inside and then boards the plane. If he is terrorist, the door does not open. Okay, so this system is very difficult to make. How many things you have to compare? उसका सांस कैसे चल रहा है, वो सही से देख रहा है कि नहीं, कोई परेशान तो नहीं है, पिछली हिस्ट्री क्या है, पता नहीं क्या क्या, तब जाके आप बता पाएंगे. लेकिन अगर हिस्टोरिकली चीज़ों को देखा जाए तो एक साल के अंदर जब 10 लाख आदमियों ने हवाई जहाज का सफ़र किया तो सिर्फ 2 टेररिस्ट थे जिन्होंने सफ़र किया था. तो हमारा सिस्टम बिल्कुल आसान है, सब क्लिक ब्राउज़र खोलते हैं. क्या एक्यूरेसी है इसकी? 99.99999% चाहिए ऐसा सिस्टम. मतलब एक सिस्टम जिसकी एक्यूरेसी 90.9999 है, तो सिस्टम इधर कहाँ करेगा? वहाँ करेगा जहाँ पे एक्यूरेसी तो बढ़ गई है, लेकिन वहाँ करेगा जहाँ हमको नहीं चाहिए था. ये समझना जरूरी है. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन, अगर कोई एक छोटा पॉपुलेशन है जहाँ पे हमें जो है हम फोकस कर रहे थे, लेकिन वो वहीं पीरियड कर देगा, एक्यूरेसी भी बड़ी हाई हो जाएगी, हम फंस जाएंगे मामला. These things are there. So बायस को मिटिगेट कैसे करें? तो बायस को मिटिगेट ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारे वेट्स हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी चीज़ों की इतनी है, तो हम उनके जो अलग इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके जो रिवर्स है ऑर्डर. सो weight the likelihood of individual data points being selected for training according to the inverse of their frequency in the occurrences. So जितना ज़्यादा वो है उतना उसके लेने की probability कम करो, 1/that probability कर दो. तो क्या है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो कम बार लिया जाएगा, कम बार आया ज़्यादा बार लिया जाएगा. तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये जो है वो उसके अकरेंस की फ्रीक्वेंसी का उल्टा है, तो आपका कंट्रीब्यूशन लगभग बराबर हो जाएगा. फिर आप इस पर डेटा ट्रेन करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी को संबंध ठीक चीज़ें से मिलेगा. एक दूसरा तरीका है, और आई थिंक ये भी इंटरेस्टिंग तरीका है कि उसमें जो हमारा आइटम है ना, उसकी इनपुट एम्बेडिंग निकाली, उसके बाद हिडन लेयर्स है, जिसके बाद वो ट्रेन किया गया, उसके बाद उससे क्लासीफायर आ गया. मेरा क्लासीफायर के साथ देखो देयर आर फ्यू थिंग्स ओनली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी. जैसे कि ह्यूमन तो सब में थे, फेस तो सब में था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई स्किन टोन की. तो विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन टोन, ये स्किन टोन को पहले सेट करो, फिर दूसरे स्किन टोन को सेट करो कि हमारे पास आउटपुट आए, उसके रिस्पेक्ट में इसके परफॉर्मेंस को देखो. और अगर वहाँ पे दोनों में वैल्यू में चेंज आए, इसके दो अलग अलग आउटपुट में यहाँ पे परफॉर्मेंस में चेंज आए, तो इसको नेगेटिवली ऊपर की तरफ लेके जाओ. ये दूसरा तरीका हो सकता है. अगर आपको फेयर सिस्टम बनाना है तो पहला तरीका हमने बात किया कि आप जो है आइटम की सैम्पलिंग एक डिफरेंट तरीके से करो, जिसमें जो आइटम आया है उसके जो एवरेज है उसके इन्वर्स से करोगे तो आइटम सही हो जाएंगे, ठीक तरीके से होगा. दूसरा तरीका ये है कि एम्बेडिंग में जब इसका आउटपुट आ रहा है तो हिडन लेयर से आप दो अलग अलग वो हेड्स निकालो. एक हेड ये बताएगा कि जो आप टास्क करना चाहते हो उसके बारे में, और दूसरा बताएगा कि जो आपका सेंसिटिव एट्रीब्यूट है उसके बारे में, कि सेंसिटिव एट्रीब्यूट्स इससे कैसे निकाला जा सकता है. और अगर जब दो अलग अलग से जो अलग अलग क्लासेज हैं या जितनी भी क्लासेज हैं आपकी सेंसिटिव एट्रीब्यूट्स की, उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे टास्क में कुछ डिफरेंस आता है, तो आप यहाँ पे इसको प्रोपेगेट करो कि हिडन लेयर उसको एडजस्ट करें कि वो लगभग सेम ही हमें एक्यूरेसी देने की कोशिश करें. मेक सेंस? दूसरा तरीका है जिसमें हम मॉडल के लेवल पे चेंज करते हैं. और तीसरा बहुत ही लेटेस्ट तरीका है जो ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए. कि ऐसे कर सकते हैं आप व्हाट यू डू
कि दिस इज ए ऑटो एनकोडर स्ट्रक्चर, जिसके बारे में अभी बात करेंगे, मैं अपने लेक्चर में थोड़ा सा और बात करूंगा इसके बारे में अगली बार में। वो कहता है कि जो भी आइटम है उसका हम हिडन रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये ऑटो एनकोडर है, जो कहता है कि जो इनपुट है वही आउटपुट होगा, तो हम इसका हिडन रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसके बाद उसको बड़ा करते हैं ताकि वो सेम बन जाए। ऐसा फीचर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो इन्होंने कहा कि जब हम इसको निकालेंगे तो पहले तो आप करेंगे कि लेटेंट स्ट्रक्चर इसका निकालेंगे कि सही तरीके से लेटेंट स्ट्रक्चर निकालो। फिर दूसरा काम आप करेंगे एस्टिमेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट आइटम्स, कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। जैसे जो वाइट स्किन टोन है, ब्लैक स्किन टोन है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि लेटेंट स्ट्रक्चर में चूंकि आपके जो वाइट स्किन टोन है वो ज़्यादा है और ब्लैक वाला कम है, तो वो यहाँ और यहाँ आने लगेंगे। सो व्हाट यू कैन डू कि आप इसके हिडन रिप्रेजेंटेशन में ही जो दूसरा वाला है, या ये चीज़ को आप बढ़ा दें और ऊपर वाले दूसरे वाले को आप इस दूसरे वाले की पीक को आप नीचे की तरफ घटा दें। तो हिडन रिप्रेजेंटेशन में अगर आप इसको चेंज कर देंगे वहाँ पे, तो क्या होगा कि हमारी जो बायस है इससे काफ़ी कम हो जाएगी। याद रखिए कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है और इसके लिए आपको किसका त्याग करना पड़ेगा, एक्यूरेसी का। आपकी एक्यूरेसी ऐसे सिस्टम में कम हो जाएगी। ठीक है, सो आई वुड स्टॉप एट दिस मोमेंट। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। और थोड़ा फास्ट रहे, लेकिन मुझे लगता है टॉपिक सिंपल था और ये फोकस आपको करना है कि जो टेक्निक है उसके बारे में। कोई सवाल है मुझे बताइए। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कैन यू क्लोज दिस एंड सी द पार्टिसिपेंट, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट प्लीज। Online participant, do you have any question? Dr. Aditya, are you here? Okay. हाँ, कोई सवाल बताइए। कोई सवाल? Hello. Yes, हाँ। So model will be biased only when the data is biased, or there are some other options. नहीं, मैंने बताया ना कि सिर्फ डेटा के अलावा आप मॉडल भी ऐसा बना सकते हैं जो एक दूसरे तरीके को, मतलब वाइट वाले को ज़्यादा एक तरीके को ज़्यादा फेवर करे, दूसरे तरीके को कम फेवर करे। डिप्लॉयमेंट भी अलग तरीके से आप कर सकते हैं कि जो एक तरीके की चीज़ों को ज़्यादा अच्छा करे, दूसरे को अलग तरीके से करे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? Yes sir. क्योंकि मॉडल के अंदर एक इन्हेंसमेंट पार्ट भी है। आप ऐसा इन्हेंसमेंट लगा दो जो दूसरों को खराब कर दे, इसको अच्छा कर दे। मॉडल के अंदर भी आप कर सकते हैं। सिर्फ डेटा ही नहीं इंपॉर्टेंट है, बाकी उसके अंडरलाइन जो सिस्टम है, अंडरलाइन सिस्टम रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से बनाता है वहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन में भी हो सकता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग तरीके का हो सकता है कि जब भी ये बोलता है मैं उसी को मानता हूँ। बायसेस जो हमने अलग अलग तरीके की बात की, वहाँ से आप बात कर सकते हैं कि एक तरीके की चीज़ को हमेशा मान के ही चलता हूँ कि वाटरमेलन कहेगा तो मतलब रेडी होगा, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है ना। तो ऐसे बहुत सारे तरीकों से बायस आ सकता है। Okay. Have I answered your question? Yes. सर जैसे जो थर्ड मेथड था हमारा बायसनेस को मिटिगेट करने के लिए, Correct. तो उसमें लास्ट में दो चीज़ें आउटपुट में थी। वन वाज द लेबल्स एंड द सेकंड वन वाज द एट्रीब्यूट। इट वुड इज दैट इट वुड बी अ सेंसिटिव एट्रीब्यूट। तो एक सेंसिटिव इन व्हाट सेंस वो रिक्वायर टू? नहीं, सेंसिटिव एट्रीब्यूट जैसे कि जो हमारी कैटेगरीज है ना, जैसे हमारे पास जैसे मेल फीमेल की हमने बात करी या स्किन टोन की हमने बात करी, तो जब स्किन टोन चेंज हो रहा है तो वो उसमें उसकी बात कर रहा हूँ। दीज आर द एट्रीब्यूट्स हाउ विद रिस्पेक्ट टू देम if I change the male to female or different skin tone, my accuracy should be on the same level. It should not go down. So how would it change, like according to the sensitive attribute? Would it update itself or like? No. So actually, when you are feeding the data, then you think that the testing data is divided into two parts. You assume in that way, because testing data. Let's assume you have a very bad system. Okay, so example में सिर्फ एक ही जगह सही आंसर देता है ना। मान लो एक ऐसा बहुत खराब मॉडल है, मैं इसको 100% डिक्रेट कर सकता हूँ। कैसे? 99% डेटा ही डिलीट कर दूँ तुम्हारा, सिर्फ वही डेटा करेक्ट आंसर देता था। तो केयरफुली सिलेक्टेड एग्जाम्पल जो है किसी भी तरीके से हमारे सिस्टम को गलत तरफ लेके जा सकता है। तो मैंने कहा जो भी डेटा है उसके दो टुकड़े करो। पहले एक टुकड़ा करो जहाँ पे हम केयरफुली सिलेक्ट कर रहे हैं कि हम सारे के सारे मेल है, सारे के सारे फीमेल है, सारे के सारे वाइट है, सारे के सारे ब्लैक है। अब उन पे एक रिसीव करो, ठीक है, दो अलग अलग डेटा बेसेस और वहाँ पे उसी से होना चाहिए। Okay. I think Dr. Professor Aditya Jain
and thank you Aditya for joining and again coming to this session. So we welcome you, Professor Aditya. Are you able to hear me? Hello, can you listen to me? Yes, I can hear you. Yeah. Thank you, Professor Aditya, for your time. Everybody, please clap and welcome. So the online participant next session would be on the diffusion models, and you know that diffusion models are not very old. I think 1.5. Can anyone tell that? Can you listen to me? Yes, I can hear you, sir. Can you hear me? You can raise your hand. Car, which is saying that okay. Yes. Sir, are you I able may to? not be able to listen. Okay. Complete. So something what happens now when we write all Can this listen. iPad, at that time we don't put anything on the on our ears, otherwise sound get echoed. So ये प्रॉब्लम हो जाता है. तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे कंप्यूटर पे लगाया, फिर उसको कान पे लगाया, फिर इस पे लिखना शुरू किया, लिखा ऐसे फिर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट और डबल हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है. Yes. So we are good to go. Please start. Yeah, you can start. The stage is all yours. Can you please type? Yes. Typing also. You will not be able to.